Hello friends, good morning. Let us start with our first lecture on the subject of the law. But before starting our law subject, I would like to share with all of you one of the sentence of an American comedian, Lucy Ball, who talk about hard work actually. His quote is luck. I don't know anything about luck. I have never banked on it, and actually I'm afraid about the people who do bank on the luck, because for me hard work is everything. If you do the hard work, you will get the success automatically. Give your hard work, your sweat, your determination, and the luck will follow you. So friends, any career you choose, definitely do the hard work. That hard work will give you the success. Okay, let us start with our law lecture now. Friends, actually, generally, the first year of the law have this subject called as the Indian Contract Act, Indian Penal Code, etc. But before starting that subject, I would like first of all to share with you the basic concepts which are generally used in the law. Because many times when we teach the students law and the students learn the law, we impliedly consider that student know this basic concept, but actually they don't. Many times after completing the lecture or after 6 months of a class, they come and ask me, ma'am, what is mean by the word plaintiff, what is mean by the word defendant, etc. And they even don't know the basic meaning of that word. Then definitely the knowledge they get in the class will be lacking part. So I generally prefer to start first of all with the basic concepts in the law, which are necessary to be known to the students who are learning the law. Okay. So going before to the any basic concept, let us have the look on a word law. Now, what is mean by the word law? Actually, generally, there is a one proverb which is said about the law, and that saying is, law is nothing but a common sense. You know why this is so said? Now, let us tell me, if you put a petrol in your vehicle, is it necessary that you'll read the Indian Contract Act to know that you have to pay the person for taking the petrol? No, na. It you know common sense hai, huh? That you have to pay to that particular person for taking the petrol from that person. Huh? Now let us take another example. After completing your college, you went to the hotel and take the breakfast from there. Huh? Now is it necessary that you should be told that it is a legal obligation of you that you should pay to that person? It's a common sense. Huh? Everybody knows that you have to pay for that particular thing. Huh? Now we'll go to the something about IPC. Is it necessary to tell you that you should not hurt anybody without any reason? Or is it necessary to tell you or read Indian Penal Code 1860 to know that if you hurt anybody without reason, if you harm anybody without reason, or if you make a theft in the house of anybody, you will be punished? No necessity of saying this, okay? Because it's a common sense key. You should not hurt anybody without reason. You should not harm anybody without reason. Huh? That murder or committing the theft or dakati, these all are considered to be the crime. No necessity at all to say that these are considered to be a crime, or for knowing this you have to read the books of the law, right? So simply, in general language, law is nothing but a common sense. In general language, law are the rules, regulations which maintain the law and order in the society, which maintain the peace and order in the society. Okay, but if we take one particular definition of the term law, we can say that the law means rules and regulations for the purpose of administration of a justice. Okay, what is meant by the word law? Law means rules, regulations which are necessary for what purpose? Administration of a justice, to maintain the justice in society. The rules and regulations which we follow, that will be considered as a law. Okay, now let's move to some basic concepts in the law. Okay, basically there are many types of a law, but the basic kind in which a law get divided is the civil law and criminal law. Or any wrong which generally happen in the society is of a two type. Okay, one is a civil wrong and another is considered as a criminal wrong. Now we'll move to the first of all civil wrong or civil law.
The law which relate to the matters of a money, property, banking issues, cooperative issues, these all laws are considered to be what we can say as a civil law, and the law which relates to the crimes will be considered as a criminal law. Now, first of all, we'll move to the side of terms used in the civil law. See, I'll give you one example. Suppose I have taken 10,000 rupees from one person known as Ajay. And frequently I'm asking that Ajay to repay that particular money. But Ajay is not repaying the money to me. So I have a cause of action. I can take action over Ajay in the legal way in the law court. Okay. Now, when I take a legal matter in the court of law against the Ajay for the recovery of my money, the word which will come here is a suit. S-U-I-T, suit. Now, what is meant by the word suit? A civil action filed in the court of law is considered as a suit. When we file the civil action in the court of law, we did not use the word civil complaint or we did not use the word civil case. Generally, when we file the civil matter in the court of law, we use the word civil suit. क्या फाइल कर दिया हमने? सिविल सूट फाइल कर दिया हमने वहां पे. Now, when Ajay is not repaying my money, I will file the civil suit over the Ajay. S-U-I-T. Okay. Now, the person who takes an action, जो पर्सन यहाँ पे एक्शन ले रहा है ना, जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है कोर्ट में, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ प्लेंटिफ. क्या बोला जाएगा उसको? प्लेंटिफ. प्लेंटिफ मीन्स अ पर्सन हु फाइल द सूट इन द सिविल कोर्ट. प्लेंटिफ मतलब कौन होगा? जो सिविल सूट कोर्ट में फाइल कर रहा है वो पर्सन मतलब क्या आ जाएगा? प्लेंटिव कंसिडर किया जाएगा. या फिर ले लो कोई और एग्जांपल, हमारे जो नेबर है वो हमारे प्रॉपर्टी में आके एनक्रोच करके उनका जो वॉल है वो बांध रहे, वहां पे दीवार बांध रहे. तो मैं उनको रोकने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकती हूँ. तो मैं कौन कंसिडर की जाऊंगी वहां पे? I'll be considered as a plaintiff. Okay, so you got the word plaintiff. Plaintiff means a person who filed the civil suit in the court of a law. Okay, now go to the opposite side. That Ajay, जिससे मैं पैसे रिकवर करवाना चाहती हूँ, the person on whom I'm going to file the suit for recovery of my money, that person will be considered as a defendant. ध्यान में रहा? सेकेंड वर्ड हमें कौन सा मिला यहाँ पे? टू पार्टीज टू द सिविल सूट आर प्लेंटिफ वर्सेस डिपेंडेंट. प्लेंटिफ मतलब जो सूट फाइल करता है, जिसपे अन्याय हुआ है, जिसका राइट वायलेट हुआ है, दैट पर्सन जो कोर्ट में सूट फाइल करेगा, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ प्लेंटिफ. गॉट द पॉइंट? And the Ajay over which I'm going to file the money recovery suit, that Ajay will be considered as a, क्या बोला जाएगा उसको? Defendant consider किया जाएगा. Okay, so got the point. Two parties to the civil suit are a plaintiff, one who filed the suit, and defendant on whom the suit is going to be filed. Now you will say कि उसको defendant क्यों बोला जाता है? It's a simple. वो अपना डिफेंस देगा ना कि बाबा मैंने इनसे 10,000 रुपए लिए ही नहीं थे बोलेगा, या फिर लिए थे तो मैंने उनको पैसे ऑलरेडी दे दिए और अब ये झूठ बोल रहे ऐसे बोलेगा. तो जो भी होगा वो अपना डिफेंस देगा वहां पे. सो देयरफॉर अजय विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफेंडेंट. गॉट द पॉइंट? सो प्लेंटिफ वन पार्टी, सेकंड पार्टी इज कंसिडर्ड एज अ डिफेंडेंट. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा जिससे वो अपने एलिगेशंस कोर्ट में रखेगा. अपना जो भी स्टेटमेंट है अजय के अगेंस्ट वो रखेगा. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ प्लेंट. गॉट द पॉइंट? सेकंड वर्ड इज अ plaint. P-L-A-I-N-T. plaint. Now, by the filing plaint in the civil court of a law, plaintiff files his suit. Okay, so जिस डॉक्यूमेंट में मैं अपनी पूरी स्टोरी डालूंगी कि कैसे अजय ने मुझसे पैसे लिए थे एंड कैसे वो उसने वापस नहीं दिए, that all story which I will put into the document, and that document will be considered as a plaint consider किया जाएगा उसमें. एंड जब वो अजय अपना आंसर देगा मेरे प्लेन को, सो जिस डॉक्यूमेंट से डिफेंडेंट अपना से देता है, अपना आंसर देता है, द डॉक्यूमेंट बाय व्हिच डिफेंडेंट गिव्स हिज आंसर, द डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिटन स्टेटमेंट. गॉट द पॉइंट? द डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज अ रिटन स्टेटमेंट. सो प्लेंटिफ वन हु फाइल्ड द सूट, defendant against whom the suit is filed. Plaintiff files his suit with the document known as a plaint, एंड डिफेंडेंट जो आंसर देगा वो डिफेंडेंट आंसर देगा जिस डॉक्यूमेंट से
उस डॉक्यूमेंट को कंसिडर किया जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट. हाँ. Now further two words which come when we start learning the law, that are sue and sued. Some used to say sue, sued, or some used to say sue, sued. हाँ. Okay, I will use the word sue and sued यहाँ पे. See, suppose I have taken one mobile of the Jio. And that mobile, Reliance company's Jio mobile I have taken, the mobile is found to be defective. Mobile क्या हो गया वहाँ पे? Defective लग गया. हाँ. भले ही मैंने वो इचलकरंजी के किसी फ्रेंचाइजी से वो मोबाइल खरीदा है, लेकिन मैं सूट किस पे फाइल करूंगी वहां पे? आई विल फाइल द सूट ओवर द रिलायंस कंपनी. ओके, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? कंपनी जो है रिलायंस कंपनी, दैट कैन बी स्यूड. हाँ. और जब आप सूट फाइल करते हो, मतलब मैंने रिलायंस पे सूट फाइल किया, तब आई कैन स्यू. एंड सेकेंड साइड, जब रिलायंस पे सूट फाइल होता है तो रिलायंस कैन बी स्यूड. स्यू मतलब जब हम लोग एक्शन लेते हैं, किसी पे सिविल सूट फाइल करते हैं, तो वर्ड कौन सा यूज हो जाएगा वहां पे? द वर्ड यूज्ड इज अ स्यू. और जब हम पे सूट फाइल होती है, तो द वर्ड यूज्ड विल बी स्यूड. सो अ पर्सन व्हेन ही स्यूज, हाँ, और he files an action in the court of a law, it says that sue. और जब आप पे सूट फाइल होती है, then the word used will be considered as a sued. So we can have an example of the company. Just we have seen कंपनी को in the language of the law legal person समझा जाता है, right? कंपनी को राइट्स है, कंपनी को ड्यूटीज है, तो कंपनी को क्या समझा जाता है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कंपनी को भी एक पर्सन समझा जाता है, और एक वर्ड यूज किया जाता है या एक सेंटेंस यूज किया जाता है. वो सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स वहां पे? कंपनी कैन स्यू एंड कंपनी कैन बी स्यूड. अगर कंपनी ने किसी को माल दिया है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो कंपनी क्या फाइल करेगी? सूट फाइल करेगी. और कंपनी ने माल दिया है और वो माल डिफेक्टिव निकला और कंपनी रेडी नहीं है कंपनसेशन देने के लिए, तो सामने वाली पार्टी कंपनी पे क्या फाइल करेगी? सूट फाइल करेगी. सो वी विल यूज द वर्ड कंपनी कैन बी sued. So got the point friends? In the civil law generally these are basic words which everybody should know. सिविल मैटर में क्या फाइल किया जाता है? सूट फाइल किया जाता है. ओके, नंबर 1. हाँ. नंबर 2, सिविल मैटर में जो पार्टीज होंगे वो कौन होंगे? जो सूट फाइल करता है, मालूम फाइल द सूट इज अ प्लेंटिफ. जिस पे सूट फाइल होगा he will be called as a defendant. Okay. The person on whom the suit is filed is a called defendant. हाँ. जिस डॉक्यूमेंट से प्लेंटिफ अपनी प्लेंट फाइल करेगा उसको बोला जाएगा प्लेंट, और जिस डॉक्यूमेंट से डिफेंडेंट अपना आंसर देगा उसको क्या बोला जाएगा? रिटर्न स्टेटमेंट. एंड व्हेन वन पार्टी फाइल द सूट वी से ही कैन स्यू. और अगर आप पे सूट फाइल हो रहा है तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड कौन सा? ही कैन बी स्यूड. समझो, कल जाके कोर्ट ने अजय को ऑर्डर कर दिया कि बाबा अजय आप इनके 10,000 रुपए देना लगते हो. जजमेंट दे दिया, डिग्री पास कर दी, और अजय को बोल दिया कि आपको इनको 10,000 रुपए देने. लेकिन अजय को लगता है कि उस पर अन्याय हुआ है, उस पर इनजस्टिस हुआ है. हाँ, तो अजय क्या कर सकता है? अपील कर सकता है. अपील कहाँ पे करेगा? हायर कोर्ट में. जिस नीचे के कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके ऊपर के कोर्ट में जाके अजय क्या करेगा? अपील करेगा वहां पे. हाँ, तो अजय in that case will be considered as a appellant. The person who makes an appeal will be considered as a appellant. हाँ, and जिसके अगेंस्ट अपील की जाएगी ना, मतलब मैं, तो I will be considered as a respondent. मुझे क्या कंसिडर किया जाएगा? Respondent. So two parties to the contract was plaintiff defendant. And when the matter goes into the appeal, that two parties क्या हो जाएंगे वहां पे? That two parties will become appellant and a respondent. Okay, so these are the basic terms which are used in the civil law. Now we'll move to the criminal law. Criminal law में देखो कैसे होता है यहाँ पे. सिविल रॉन्ग जब होता है ना, तो वो प्राइवेट रॉन्ग होता है फ्रेंड्स. हाँ, प्राइवेट रॉन्ग मतलब अगर मेरे और अजय के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो रहा है तो वहां पे हम दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंजर्ड पार्टी हम लोग ही होंगे. लेकिन जब कोई क्राइम होता है ना, से फॉर एग्जांपल आप लोग ही देखो, अगर आपके नेबर के घर में भी चोरी होती है तो आप खुद को देखते हो, वहां पे आप अलर्ट हो जाते हो. आपको लगता है कि आज नेबर के घर में चोरी हुई है, कल मेरे घर में हो सकती है. कहीं जाके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में भी कोई क्राइम हुआ है तो हम लोग खुद को वहां पे देखते हैं. आज वहां पे हुआ है, कल हम पे भी हो सकता है. मतलब क्राइम जो होता है ना, वो मेंटली ही पब्लिक रॉन्ग होता है, क्योंकि सारा पब्लिक जो होता है वहां पे खुद को देखता है इन दैट पर्टिकुलर मैटर. तो क्राइम जनरली कौन होता है? पब्लिक रॉन्ग. तो क्राइम में जो कंप्लेनेंट होता है ना, वो कंप्लेनेंट जनरली गवर्नमेंट होता है. क्राइम मतलब आपको पता है, जब भी कोई
लॉ वायलेट करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा तो वहां पे क्या कंसिडर किया जाएगा, क्राइम कंसिडर किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल अभी एक XYZ नाम के पर्सन ने हाँ एक व्यक्ति के घर में चोरी कमिट की है और चोरी करते हुए उसको पकड़ा गया है वहां पे। हाँ तो लेट अस हैव एन एग्जांपल, द टू पार्टीज इन द क्रिमिनल रॉन्ग विल बी कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड। टू पार्टीज इन द क्रिमिनल रॉन्ग विल बी कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड। जो कंप्लेंट करता है, जो केस फाइल करता है, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लेनेंट, एंड जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की गई है he will be considered as a accused। तो इस एग्जांपल में देखो चोरी हुई है, पब्लिक रॉन्ग है क्राइम, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेनेंट कौन होगा वहां पे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट विल बी अ कंप्लेनेंट, so I reside in the Maharashtra, so who will be a complainant in this particular case, state of Maharashtra। हाँ जो कंप्लेन करता है he will be considered as a complainant even though victim कोई और है, इवन दो क्राइम किसी और पे हुआ है, लेकिन क्योंकि क्राइम पब्लिक रॉन्ग है तो मैटर भी कौन फाइल करता है वहां पे, गवर्नमेंट कंप्लेनेंट होता है। सो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चोरी किसने की थी वहां पे हमने देखा था, XYZ ने चोरी की थी। सो अक्यूज्ड, अब XYZ पे क्राइम प्रूव हुआ है क्या, नहीं हुआ है अभी तक। XYZ अभी कौन है, जस्ट आरोपी है राइट क्राइम का, तो XYZ को क्या कंसिडर किया जाएगा वहां पे, ओनली ही विल बी कंसिडर्ड एज अ आरोपी। सो इन इंग्लिश ही विल बी कंसिडर्ड एज अ अक्यूज्ड। गेटिंग द पॉइंट। सो क्रिमिनल लॉ में हम लोग क्या फाइल करते हैं, कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग होता है तो कंप्लेंट फाइल करेंगे या क्रिमिनल केस फाइल कर देंगे। हाँ क्रिमिनल लॉ के दो पार्टी क्या होंगे वहां पे, टू पार्टीज ऑफ द क्रिमिनल लॉ विल बी नंबर वन who is a complainant, one who filed the complaint, and against whom the complaint is filed will be considered as a accused till the guilt is not proved। क्योंकि सी फ्रेंड्स हमारे क्रिमिनल लॉ का जो बेस है वो बेस है कि जब तक क्राइम प्रूव नहीं होता है तब तक उस इंसान को क्या कंसिडर करना है, इनोसेंट प्रूव करना है। पूरी क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही हम लोग किसी को क्रिमिनल समझते हैं या किसी को इनोसेंट समझते हैं। हाँ सो ये कब तक प्रूव नहीं होगा, जब तक पूरी ट्रायल खत्म नहीं होती है। सो टू पार्टीज आर कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड। हाँ मतलब कि जो कंप्लेंट करेगा वो, और अपोजिट साइड में कौन होगा वहां पे, अक्यूज्ड मतलब आरोपी जिसपे आरोप लगाए। सी फ्रेंड्स अगर आफ्टर द कंप्लीट ट्रायल it is proved that he has committed the crime, then he will be convicted। convicted मतलब क्या आ जाएगा, दोषी प्रूव होना। हाँ it is proved that he has committed the crime, for that the word which is used is a convict। got the point, convicted मतलब दोष प्रूव होना, क्राइम प्रूव होना। हाँ क्रिमिनल प्रूव हो जाएगा वो। और अपोजिट साइड अगर आफ्टर द ट्रायल इट इज प्रूव्ड कि उसने कोई क्राइम कमिट किया हुआ नहीं है, वहां पे वो इनोसेंट है, then the word used is the acquit। हाँ so the accused may either be convicted means crime proved and he is a criminal, and opposite side अगर accused हाँ is proved to be innocent then it will be considered as a, वो क्या हो गया फ्रेंड्स वहां पे, एक्विट हो गया। थोड़ा मूवी वाली भाषा में बात करें तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, वो बाइज्जत बरी हो गया। दैट इज उसके जो भी आरोप लगे हुए वो आरोप डिस्प्रूव हो गए। सो उसको चार्ज से क्या किया जाएगा वहां पे, रिलीज किया जाएगा राइट। सो क्रिमिनल लॉ में हम लोग वर्ड्स क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, वहां पे कोई भी क्रिमिनल मैटर फाइल होता है तो क्रिमिनल केस या क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। टू पार्टीज टू द क्रिमिनल केस कौन होंगे वहां पे, कंप्लेनेंट, अक्यूज्ड आरोपी। और अगर उस पर आरोप प्रूव होता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ कन्विक्ट। अगर आरोप प्रूव नहीं होता है वो इनोसेंट प्रूव हो जाता है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ, क्या कंसिडर किया जाएगा फ्रेंड्स वहां पे उसको, ही विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्विटेड मतलब निर्दोष प्रूव हो गया वहां पे। हाँ सो फ्रेंड्स फॉर टुडे we will just summarize what we have seen today in a civil law। there are two parties, plaintiff defendant, two documents, plaint and written statement, and two word, company can sue and company can be sued। और अपोजिट साइड अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ में आते हैं तो क्रिमिनल लॉ में हम लोग क्रिमिनल केस या कंप्लेंट फाइल करते हैं। अगेन क्रिमिनल लॉ में दो पार्टीज कौन होंगे, कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड मतलब आरोपी, और अक्यूज्ड का अगर क्राइम प्रूव हो गया तो ही इज कंसिडर्ड एज अ कन्विक्ट, और क्राइम अगर डिस्प्रूव हो गया तो ही इज कंसिडर्ड एज अ acquit। Okay, I will come with the next chapter soon. Thank you.